third part of the chapter is the study of Rana tigrina. And Rana tigrina is the name of the species of frog. Right, बच्चों लोग? Now, जैसे हम जानते हैं, it's a vertebrate which belongs to the class Amphibia. Why Amphibia? Because it can live both on land as well as on water. What do we mean by that? It can live on land, and for reproduction, it requires water for reproduction. दूसरी important बात, it can breathe both in land as well as in water. So it's a true amphibian. It belongs to the superclass Tetrapoda, चार पैरों वाले, with four limbs, and its phylum Chordata of kingdom Animalia. Now, let us talk about the habit and habitat of Rana tigrina. So, it is a cold-blooded animal. मतलब it is poikilotherm. इसका मतलब ये होता है it is not able to regulate its own body temperature. The body temperature will fluctuate with respect to the external environment. क्योंकि ये जो animals होते हैं वो ectothermal होते हैं. They lose their body heat through the environment, as a result of which they are not able to maintain their body temperature. That is why they are called poikilotherms. Now, one property of this Rana tigrina is it shows this protective phenomenons, which are called as the camouflage and mimicry. मतलब वो अपने जो environment है उस environment को it is able to adjust itself. मतलब उसका जो color होगा it will hide itself from its predators by using this protective coloration, जिसको हम कहेंगे camouflage and mimicry, right? So ये एक बात हो गई. Then when it comes to their fertilization, they show external fertilization. That is, they show fertilization in water. That is why they always need water for their survival, for fertilization rather. And that makes them amphibians. They can live on land, they can live on land, but they always require water for fertilization. अब ये पॉइकिलोथर्म होने की वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, इसलिए जब एक्सट्रीम ठंडी हो जाती है दे हैव टू स्लीप इन द विंटर्स देन, एंड दैट विंटर स्लीप इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन, एंड देयर समर स्लीप इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. सो ये दो टर्म्स हमको याद रखने बच्चों लोग, दैट हाइबरनेशन इज देयर winter sleep and estivation is their summer sleep. Okay, so ये टाइम पे दे मेक डीप burrows, सॉइल के अंदर डीप burrows बनाएंगे वो लोग, और वहां पे they will live in order to escape from the extreme heat and the extreme cold. Okay, और ये भी आपको पॉइंट क्लियर है, it is called camouflage and mimicry, जहां पे they have the ability to change the color to hide them from their enemies. That is called camouflage. Okay, and this protective coloration that they take is called as mimicry. Have you ever touched a frog, bachalo? If you try to catch a frog, it will be like you are catching a wet soap. ऐसा लगेगा कि आप कोई गीले साबुन को टच कर रहे हैं. It will slip from your hand. Okay, इसका रीजन ये है because the skin of the frog is smooth and it is slippery, and the skin shows the presence of glands, and these glands secrete what? Mucus, and that keeps the skin moist. Can you think of any reason why the skin is kept moist? Yes, because the skin is used as a respiratory surface, and the respiratory surfaces are always kept moist. Okay. Also remember one fun fact, that is, the frogs never drink water, but they absorb the water through their skin. Okay. Now, if you are looking at a frog, so dorsally, dorsally, the color would be olive green, and it will have those irregular spots on its body, whereas the ventral surface will be pale yellow in color. Okay, that is about its external appearance. Then, how should we divide the body of the frog in? The body is divided into two parts. One is head
the other is trunk. यहाँ पे हम एक पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं कि in the case of amphibians, the neck is absent. सारे amphibians में neck absent होती है, तो frog is not an exception for that. But amphibians में tail होती है. Frog एक ऐसा amphibian है जिसके पास tail नहीं है. So that is why it is called as a tailless amphibian. Frog is tailless. So absence of neck is common in all the amphibians. But absence of tail is a characteristic feature of frog within the class Amphibia. So when we talk about the uh, head of cockroach, okay, head of cockroach, what are the important parts that we see on the head? We see that they show the presence of a paired nostrils. उनका जो हेड होता है ऐसा स्नाउटी होता है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप आगे आता है, वहां पे यू विल सी a pair of nostrils which will help them to breathe, and uh, they have a pair of eyes, but the eyes are bulging eyes, जैसे बाहर आए हुए eyes, and they क्योंकि नेक नहीं है और वो नेक की एब्सेंस को ओवरकम करने के लिए उनके पास बल्जिंग आईज है, विद द हेल्प ऑफ व्हिच दे कैन मूव देयर आईज इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू सी, and they have a protective covering over their eyes, okay, which protects the eyes under water, and that membrane is called as the nictitating membrane. तो एक important point है जो हम ध्यान रखेंगे, that the eyes are covered by nictitating membrane जो उनको protect करता है water में. दूसरा जो एक सेंस ऑर्गन है और एक एम्फीबिया की खासियत है कि उनके पास एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होता, लेकिन उनके पास ईयर ड्रम टिम्पैनम होता है और एक्सटर्नल टिम्पैनम होता है. जैसे हमारे केस में हमारे पास एक्सटर्नल पिन्ना है, फिर हमने पास कैनाल है, फिर टिम्पैनम आएगा. बट इन द केस ऑफ फ्रॉग ये पिन्ना एब्सेंट है, and they show the presence of the eardrum which is present externally, which is called as the tympanum to receive the sound signals. Okay, then they show the presence of forelimbs and hind limbs. Okay, the trunk part shows the presence of forelimbs and hind limbs. Forelimbs आगे वाले पैर, hind limbs पीछे वाले पैर. Okay, और आपने एक फ्रॉग को देखने के बाद एक डिस्क्रिपेंसी नोटिस की होगी, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि उसके फोर जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और हाइंड लिम्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं. सो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स में फोर लिम्स आर शॉर्ट, हाइंड लिम्स आर लॉन्ग, एंड दीज लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, walking, then leaping, burrowing, etc. And these are muscular legs that they have, which help in different functions. Okay, one important thing you remember that the forelimb ends in 4 digits, and the hind limb it will end in 5 digits. Okay, how are the forelimbs ending into 4 digits and the hind limbs are into 5 digits? Okay, now एक यहाँ पे एक पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे that these digits, जैसे ये मैंने देखा है मेरे 4 digits, आपको फ्रॉग के डिजिट्स के बीच में से वेब्स होते हैं, वेबिंग्स होते हैं, which will help it to swim in water. Frog shows sexual dimorphism. Sexual dimorphism. Okay, just by looking, we'll be able to distinguish between a male frog and a female frog. When a male frog becomes sexually mature, he shows the presence of sound producing vocal sacs, जिसके मदद से it will attract the mate, the female, right? दूसरा एक मेल फ्रॉग में तो है ही ये vocal sacs. एक और चीज है कि जो मेल फ्रॉग when it enters into its sexual maturity, ये जो उसके फोरलिम्स के जो 4 digits है, ओके, उसका जो फर्स्ट डिजिट है, इट विल शो द प्रेजेंस ऑफ अ पैड कॉल्ड कोपुलेटरी पैड. इससे फीमेल्स को पता चल जाता है कि कौन सा मेल फ्रॉग इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. दूसरा, इट हेल्प्स द मेल फ्रॉग टू होल्ड ऑन द फीमेल फ्रॉग एट द टाइम ऑफ copulation, that is the intercourse. So these are the points that you need to remember when we talk about the external structure of Rana tigrina. Okay, then one point to remember is, dear students, that the frog shows
indirect development. Okay, where you have the larvae that change into the tadpole, and the tadpole changes into an adult frog. Okay, so you have a tadpole changing into a frog. अभी क्या डिफरेंस है बच्चों? एक छोटा सा डिफरेंस ये है, एक्सटर्नली तो दिखते अलग है. टैडपोल के पास टेल होता है, फ्रॉग के पास टेल नहीं होता. द tadpole is a herbivore, whereas frog is a carnivore. So herbivore के पास they have a long alimentary canal. Carnivore has got a shorter alimentary canal. तो एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे अभी यहाँ पे, because we are going to talk about quickly about the digestive system. Okay, now, the digestive system consists of the alimentary canal. Adult frog है, carnivore है, तो alimentary canal short होगा, और उसका जो intestine का length है थोड़ा सा reduced है बच्चों, as compared to the tadpole. Then it shows the presence of different digestive glands, such as it shows the presence of the liver, which secretes the bile. It shows the presence of pancreas, which secretes the pancreatic juices. Okay, so if you want to enlist कि क्या अलग अलग parts है इसके digestive system के, so it shows the presence of an opening which is called mouth. The mouth opens into the buccal cavity. The buccal cavity opens into the pharynx. The pharynx opens into the esophagus, the stomach, and the intestine. Okay, which includes the duodenum, rectum, and the outermost opening, which is called cloaca. तो चलो देखते हैं बच्चों लोग अपनी नोट्स में कि माउथ है, which is open into what? Esophagus. फिर esophagus is open into the stomach. Stomach is open into the intestine. Okay, the intestine opens into the rectum, which opens out through this aperture called cloacal aperture. Okay, तो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे exactly कि ये cloacal aperture है क्या. तो अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसी से काफी ये रिजेंबल करता है फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल. ओके, नाउ द माउथ, it's a slit like opening. It's a slit like opening. Okay, and the mouth, the buccal cavity shows the presence of a muscular tongue. It shows the presence of a muscular tongue, and the tongue of frog is bilobed like this actually. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि the tongue is free posteriorly and it is attached anteriorly. So as a result of which it can throw out the tongue in order to catch small insects. ये एक इंटरेस्टिंग बात है उनके टंग के बारे में. Okay, and the mouth opens into the uh, the mouth opens into the buccal cavity, which has the tongue situated in it, which opens into the narrow passage, which is called pharynx, short tube-like structure, which is called as the esophagus. The esophagus opens into the stomach. Stomach helps in digestion, secrete karta HCl, and the gastric juices. Okay. अब स्टमक के अंदर फूड जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कि कंप्लीट नहीं, पार्शियल डाइजेस्ट, और थोड़ा स्लरी जैसा होता है, ग्रेवी जैसा होता है, और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं काइम. ओके, सो एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखेंगे that the partially digested food which is partially digested by the action of HCl and by the action of the gastric juices is called as the chyme. Okay, now the stomach opens into the intestine. The intestine shows the presence of the duodenum. Duodenum. Okay, now here we have this intestine, right? And the duodenum receives. So if I say this is the duodenum, okay, this duodenum will receive bile from the gallbladder
and pancreatic juices from the pancreas through a common bile duct. So it is assumed that this is the duodenum, and this is a common duct from where it is going to receive the bile juice from the gallbladder, and then here you have the pancreas like this. Okay, so ये है आपका गॉल ब्लैडर जिसने लिवर से बाइल को लिया, किसने, गॉल ब्लैडर ने, उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके स्टोर करके रखा, फिर इट विल बी गिविंग इट इनटू द बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट में दिया जाएगा। ये आपका पैनक्रियाज है, वो अपना जूसेस देगा पैनक्रियाटिक डक्ट में, और दोनों मिलके देखो ये एक डक्ट फॉर्म किया है जिसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल duct. And through this common bile duct, these pancreatic juices and the bile will be poured into the intestine. Okay? बाइल जो होता है उसकी खासियत ये है कि उसके पास कोई एंजाइम्स नहीं होते। ओके, उसके पास होता है बाइल सॉल्ट्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ emulsification of fats। क्या लिखा था मैंने? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। मतलब क्या बच्चे लोग, कि एक फैट का बड़ा ड्रॉपलेट है, ओके, उसको फिजिकली ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा स्मॉलर ड्रॉपलेट से, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गई, बढ़ गई। तो बाद में आने वाली जो लाइपेज एंजाइम है जो इसका डाइजेशन कर सकती है, वो उसको एफिशिएंटली डाइजेस्ट करेगी। Okay, so that is process is called emulsification. That is the breakdown of large fat droplets into smaller forms is called emulsification of fats. इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगी, तो आने वाले एंजाइम्स जो हैं जिनका नाम मैंने लिया था लाइपेजेस, उनकी एक्टिविटी जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस है उसके अंदर ही ये लाइपेजेस होती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होती है, फिर उसके बाद स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती है, माल्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती है। तो जो फाइनल डाइजेशन जो होता है बच्चों, फाइनल डाइजेशन वो कहाँ होता है? फाइनल डाइजेशन इट हैपेंस इन द इंटेस्टाइन। और फिर जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। ओके, तो इसके लिए जो इंटेस्टाइन है, समझो हमने बनाया ये एक इंटेस्टाइन का पार्ट। ओके, तो अंदर न्यूमरस ऐसे फोल्ड्स होंगे। So internally, the intestine will be folded. So there are numerous folds, and these numerous folds are called as the villi, guys. Okay. एंड यहाँ पे अंदर ना ब्लड कैपिलरीज होती है, तो जो भी फूड यहाँ पे से डाइजेस्ट होता है क्विकली विलाई के थ्रू कहाँ चला जाता है बच्चों लोग, ब्लड, सो इट हेल्प्स इन absorption. So that is why the digested food, NCERT की line, I'll read it for you. The digested food is absorbed by numerous finger-like folds in the inner wall of the intestine, which are called as villi. And the villi will show the presence of columnar epithelium. And on the surface of the columnar epithelium, they will be microvilli. तो समझो एक विला है, इस एक विला को मैंने ऐसे बाहर निकाला, इसके ऊपर होगा एक कॉलमनार एपिथेलियम जिसके पास होंगे बहुत सारे माइक्रोविलाई, और जो खाना जो डाइजेस्ट हुआ है वो क्विकली इसके थ्रू जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर। इसीलिए ध्यान में रखेंगे, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, और इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा खाना जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से अभी जो वेस्ट रह गए वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे? यस, वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे? रेक्टम में। और रेक्टम के बाद दे विल बी थ्रोन आउट। अगर ये ह्यूमन बीइंग होता तो मैं बोलता था कि इट इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। आई एम सेइंग दैट इट विल बी थ्रोन आउट थ्रू अ ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड cloacal aperture. What is the opening called? The opening is called as the cloacal aperture. तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं about the cloacal aperture. Okay, dear children. So what is this cloacal aperture? It's a
common opening. It's a common opening for, in the case of frog, it is a common opening for the digestive system, excretory system, and the reproductive system. Okay, it is a common opening for the digestive system, excretory system, and the reproductive system. तो बच्चों ये है रेक्टम. ओके, और इस ओपनिंग का नाम हमने दिया है क्लोएका. ओके, एंड ये है समझो यूरिनरी ब्लैडर का एक साइड दिखा रहा हूं मैं, ये यूबी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहां से क्या आएगा, यूरिन आए. और इमेजिन करो ये एक मेल फ्रॉग. ओके, सो इट्स अ मेल फ्रॉग. तो ये कुछ डक्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे. ये डक्स जो है, they will bring the sperms. Okay, so now through the cloaca, what is thrown out? Feces. हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग. इसके थ्रू क्या थ्रोन आउट होगा, यूरिन. सो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग. इसके थ्रू आउट बार क्या इजैकुलेट किए जाएंगे, स्पर्म्स. मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग. ऐसे कॉमन ओपनिंग को हमको ध्यान रखना अच्छे से बच्चों लोग, कि सच अ कॉमन ओपनिंग फॉर ऑल दीज थ्री सिस्टम्स इज कॉल्ड एज द क्लोएका. क्या कहेंगे उसको, क्लोएका. सो विद दिस we have done a recap of the digestive system of Rana tigrina. Then what about the respiratory system? बड़े मजेदार है इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि फ्रॉग जो होता है ये बढ़िया से रेस्पायर कर लेते हैं ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. Okay, they can respire both in land as well as in water. In the case of in water, okay, their main respiratory organ is the skin, and such a respiration is called cutaneous respiration. Okay, ध्यान में रखेंगे, it's important thing. Cutaneous is for the skin. Okay, so it is richly supplied with blood capillaries, and it is having those mucus secreting glands, so it is a moist surface, so easily via diffusion, okay, the exchange of gases can take place. Whereas on the land, it is going to use the buccal cavity. So when it opens its mouth, the buccal cavity is also richly supplied with blood capillaries. Then, like us, it has got pair of pink colored lungs. So when the respiration is taking place with the help of lungs, it is called pulmonary respiration. So respiration with the help of lungs is called as pulmonary respiration. And respiration with the help of skin is called cutaneous. So ये तीन चीजें यूज होंगी, buccal cavity, lungs and skin. On land and water it is going to use the skin. Okay, and when it is during when it is undergoing hibernation and estivation, the main organ for gaseous exchange is going to be the skin. तो ये भी हमें important highlighted point है कि when it is undergoing hibernation and estivation, it is going to use as the skin. मतलब cutaneous respiration, its main method of respiration. Right? Very good. Now then, let us talk about its blood vascular system. So, like human beings, the blood vascular system of periplanet of Rana tigrina frog is closed type. Closed type.
okay, where the blood is going to flow through closed vessels, arteries, capillaries, and veins. Okay, जो न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम है उसको हम कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, which is made up of heart, blood vessels, and the blood. where जो ड्रेनेज सिस्टम जो वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, okay, that is the lymphatic system, consists of the lymph, the lymphatic channels, and the lymphatic nodes. Okay, so these are the two divisions of the blood vascular system. Now, the blood is made up of the liquid part, that is the plasma, and the blood components, the blood corpuscles, which includes the red blood cells, white blood cells, and the platelets. The red blood cells, okay, the red blood cells of cockroach, I'm cockroach. इसके पहले किया तो बार बार मुंह में आ रहा है. We are talking about Rana tigrina. Sorry. So the red blood cells of Rana tigrina, okay, which are called as the erythrocytes, okay, they are nucleated. Okay, they are nucleated. Yes, nucleus होता है, and they are packed with the protein which is called hemoglobin. इंसान के केस में hemoglobin है लेकिन nucleus absent है. Okay, and white blood cells आपके defense cells है. They are to there only. Now, when we talk about the heart is three-chambered heart, okay, where they show the presence of the perfectly divided atria and undivided ventricle. So उनके पास है left atrium, right atrium, and the undivided ventricle. Okay, left atrium will receive the oxygenated blood. The right atrium will receive the deoxygenated blood, or rather mixed blood. And in the ventricles, anyways, the two bloods are going to mix. So when the ventricle contract, they are going to pump out mixed blood. Okay, so there is mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Then एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, that so heart is a muscular with two atria, one ventricle. It is protected by the pericardium. Now the heart is, one second, so the heart is associated with an extra chamber. The heart is associated with an extra chamber, okay, and this extra chamber, okay, is called as, it's a triangular structure which is called as sinus venosus. क्या कहते हैं उसको? Sinus venosus. देखिए जरा एक मिनट, चलो. okay, तो ये है inferior vena cava, IVC, या उसको बोलेंगे पोस्ट केवल. एंड ये लिख के आएगा, आई होप यू कैन सी दैट, पोस्ट केवल कहेंगे उसको. ओके, नाउ दिस वन, आई, ये जो नीचे वाली ब्लड वेसल है, आई जस्ट मेक इट अगेन बच्चों लोग. So we have this left atrium, the right atrium, sorry, ventricle. This is the
वेंट्रिकल, ये हो गया डिवाइड ऐसे। अब देखिए ये है आईवीसी, जिसको हम कहेंगे इंफीरियर वेना केवा या पोस्ट केवल। यहां से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और ये है राइट सुपीरियर वेना केवा, लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा। दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग विच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। और दोनों मिलके देखो ये ऐसा ट्रायंगुलर चेम्बर बना है, ट्रायंगुलर चेम्बर ये वाला, इसको कहते हैं साइनस वेनोसिस। और ये साइनस वेनोसिस ड्रेन करेगा कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पे, इनटू द राइट एट्रियम। सो आई होप you are clear with the NCERT line which says that a triangular structure which is called sinus venosus joins the right atrium. It receives blood through the major veins called vena cava, that is the inferior vena cava and the superior vena cava, which consists of the right and the left सुपीरियर बना क्या हुआ। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है अच्छे से। अब हम देखते हैं एक और एक्स्ट्रा चेम्बर के बारे में। ओके, सो ये वंस अगेन हम लोग वैसे ही बनाएंगे। ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये आएगा एट्रिया। ओके, नाउ द हार्ट is associated with one more chamber. Okay, there is one more chamber which is called as conus ventrosus. It is called as conus, conus arteriosus. It is called conus arteriosus. Okay, and from the ventricle, the blood will flow into the conus ventrosus. Conus arteriosus. The conus arteriosus will contract, and the blood will flow towards the respiratory organs like the lungs and towards the rest of the body. Okay, and this conus arteriosus is seen from the ventral side of the heart, and sinus venosus is seen from the dorsal side of the heart. So these are the two extra chambers that are associated with the frog's heart. Okay, that is conus arteriosus and the sinus venosus. Okay, sinus venosus किससे associated है, right atrium से। conus arteriosus किससे associated है, ventricles के साथ। Okay, इनका साइड वगैरह ध्यान रखो। देखो, veins will collect the blood from the different parts of the body, give it to the heart, and that will be given to the venous system. That is, जो भी मैंने बताया, conus arteriosus, वहां से it will be sent to the body as well as to the respiratory organs. Now, moving towards the excretory system. Okay, it has a well-developed excretory system, and the frog, adult frog, is ureotelic. Okay, ureotelic matlab it removes the nitrogenous wastes in the form of urea. That is why it is called as ureotelic animal. Right, kids? अब वही अगर हम लोग बात करेंगे किस tadpole की, so the tadpole is going to be amonotelic. Tadpole is going to be amonotelic, whereas a frog is going to be ureotelic. Okay, so who are the excretory organs? Like humans, there are a pair of compact dark red color bean shaped kidneys, okay, on the either side of the vertebral column. They are made up of structural and functional units which are called as nephrons. Okay, now in the case of the male frog, किसकी बात करें हम लोग, मेल फ्रॉग। ठीक है, फीमेल नहीं, कौन से फ्रॉग की बात हो रही है यहाँ पे, मेल फ्रॉग की। देखो ये एक ब्यूटीफुल चीज देखिए, ये है एक
मेल फ्रॉग की किडनी। और उस मेल फ्रॉग की किडनी के ऊपर ही देखो ये क्या है, टेस्टिस है। और ये देखिए टेस्टिस से स्पर्म जो आएंगे वैसे कुछ कैनाल्स के थ्रू पास हो, ओके, जिनको हम कहते हैं बिडर्स कैनाल्स। और अंदर नेफ्रॉन का जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ओके, वो अल्टीमेटली ये कैरी करते हैं यूरिन यू, और ये बिडर्स कैनाल कैरी करता है स्पर्म। दोनों नीचे यूनाइट होंगे और एक यूरिनो जेनाइटल पैसेज फॉर्म करेंगे, ओके, जिसको हम कहेंगे यूरेटर्स। So ureters will carry both urine as well as sperm. The uriniferous tubules will be for urine. The Bidder's canals will carry the sperms. Okay. Shortly we'll see in the reproductive system also. And the common opening for the systems that I have already mentioned, that is the cloaca. Okay. Coming to the nervous system. The nervous system consists of the central nervous system, the autonomous nervous system, and the peripheral nervous system. Okay. The central nervous system is made up of two parts, the brain and the spinal cord. And the brain is enclosed in the खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, bony case, that is the cranium. Autonomous nervous system controls the involuntary functions, जो बॉडी की एक्टिविटी को फास्ट करता है, उत्तेजित करता है, that is the sympathetic nervous system. The nervous system which is responsible for rest and digest is the parasympathetic nervous system. So ये जो PNS है, ये है parasympathetic, which is rest and digest. और ये जो PNS है, ये है peripheral nervous system, which is made up of cranial nerves and spinal nerves. ध्यान में रखिए, important है, cranial nerves are 10 pairs, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उन ग्रुप का जिसको हम बोलते हैं एनएम्नियोटा। क्या कहते हैं इस ग्रुप को? एन एम्नियोटा, जिनके पास 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, लास्ट के 2 पेयर्स जो होते हैं वो मिसिंग। द ब्रेन इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, द forebrain, midbrain and the hindbrain. The forebrain for the sense of smell has got olfactory lobes, a large cerebral hemisphere, and a diencephalon, which is single unpaired structure. The midbrain has optic lobes. The hindbrain has the balancing part, that is cerebellum, and the medulla oblongata for involuntary function control, which comes out through opening at the base of the skull called foramen magnum. Medulla oblongata will continue as the spinal cord, which will pass through the vertebral column. So brain के लिए protection है cranium, spinal cord के लिए protection है vertebral column. Okay. Now, does frog have sense organs? Yes, definitely it has got sense organs. Okay. But जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कि जस्ट सेल्स का जमाव आ गया, ओके, सेल्स का जमाव, तो उसको नॉट वेल डेवलप्ड है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर एग्रीगेट्स, एंड दैट इंक्लूड्स द सेंसरी पैपिले which are for touch, the sensory papillae which are for touch, the taste buds for taste, gustatory, the nasal epithelium for olfaction, that is smell. ये है सेलुलर एग्रीगेट्स। दूसरा जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, they show the presence of a pair of eyes for vision, which we have already seen. For hearing, they have got tympanum and internal ear, which is for both hearing as well as balancing. एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो एब्सेंट है, मतलब ये जो पिन्ना वाला पार्ट है वो एब्सेंट है। एंड ये हो गया नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम में उनके पास 9 अलग अलग ग्लैंड्स मेंशन किए, जैसे हम लोगों ने ह्यूमंस में भी देखा हुआ है। So you got pituitary gland, thyroid, parathyroid, thymus, pineal, adrenal, the pancreatic lobes and the gonads.
Okay, and you know the pancreatic lobes can be both exocrine and they can be endocrine. जो endocrine part है उसको हम कहते हैं islets of Langerhans. क्या कहते हैं उसको हम लोग? Islets of Langerhans या फिर पैनक्रियाटिक आइलेट्स. ओके, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एकदम प्रिसाइजली ह्यूमंस में कहा जाएगा. इनको हम कहेंगे पैनक्रियाटिक आइलेट्स जो सिक्रीट करेंगे hormones like insulin, glucagon, etc. Okay, so now the last part of the systems is the reproductive system. So as we have seen that frog is sexually dimorphic. Frog is sexually dimorphic and it is distinguished into male and female sex separately on two different organisms, and they have well developed reproductive system. So if you look here, dear students, that the male reproductive system consists of a pair of testes. Look at these, the pair of testes. Okay, then vasa efferentia or vas efferent. Okay, then the urinogenital tract, the cloaca, which will open out through the cloacal aperture. Okay, so the testes are a pair of structures, yellowish in color, and they are attached to the kidneys by a double fold of skin, which is called peritoneum or mesorchium. Okay, from the testes arise small 10 to 12 tubules called vasa efferentia, which enter into the kidneys, open into the Bidder's canal, then they join with the uriniferous tubule to form the urinogenital tract or the ureters. अब देखो, ये रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोएकल चेंबर है जो ओपन आउट थ्रू क्लोएक. So cloaca is a small single chamber which is for fecal matter, urine as well as for sperms. Okay. The female reproductive system of frog consists of a pair of ovaries, pair of ovaries. The ovaries open into the oviduct. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि the kidney and the oviduct, once again, the kidney opens into the ureters, which will carry the urine separately into the cloacal chamber, whereas the oviducts will open separately into the cloacal chamber. मेल फ्रॉग में ऐसा नहीं. मेल में वो यूरिनोजेनाइटल पैसेज हुआ करता था. कौन? यूरेटर्स. देखिए यहाँ पे यूरेटर्स जो था वो यूरिनोजेनाइटल था. It used to carry both sperms from the bidder canal that is passing through the kidneys and the uriniferous tubules that are giving urine, and they were opening together in the cloacal chamber. But in the case of the female frog, it has got these two separate ducts, and this point has been touched by the NCERT test, right? And the synopsis, you need to learn this part, bachlo. So a mature female at a time can lay about 2,500 to 3,000 ova at a time. And these ova will show external fertilization, resulting in the formation of the larva and the tadpole will change into the adult frog. So जब ऐसा डेवलपमेंट होता है जहां लार्वा है और फिर अडल्ट बन रहे हैं और जो यंग फॉर्म्स है और जो अडल्ट फॉर्म्स है उनमें रिजेम्बलेंस नहीं है, ओके, तो हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो फ्रॉग इज शोइंग व्हाट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. In a way, dear student, the frogs are beneficial for mankind because they are like a method for, you can say, uh,
pest control. Okay, so we have got insect pests, okay, that eat our crops. And if the field has got frogs, the frog will be a natural predator. वो खाएगा किसको, insects को. तो हम लोग इसकी मदद से पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं. Okay. They maintain the ecological balance because the frogs will eat the insects. The frog will be eaten by a snake, so it's an important part of the food chain as well as a food web. When many food chains are linked together, it is called food web. जब multiple food chain एक साथ connected होते हैं तो उसको बोलते हैं food web. जैसे frog को स्नेक भी खा सकता है, फ्रॉग को कोई दूसरा एनिमल भी खा सकता है, कार्निवोर है वो. ठीक है. Then, in some countries, the muscular legs of frogs is considered as a delicacy, as a dish which people eat. So it can be used as a protein source by man. Okay. So in summary, ये सब चीजें हैं that you need to remember and learn. You can listen to the synopsis again and can start solving the MCQs.